तो डिग्री n इक्वल टू 1 आसीगला ताले एमे फंक्शन होची लेख let f इक्वल टू let এটা প্রুভ করিবার আছে let function equal to देखो function equal to sin u equal to x square plus सुनो ए बोले बाहर है जो डिग्रीटा ना कि जेतले इनवर्स का थिबो हमें कोन करजा बोले फंक्शन नै ले जेते कि sin u बुझेला ताले यदि ए जे sin इनवर्स x स्क्वायर यदि गोटे फंक्शन हुए ताहले तोरा u इक्वल टू एति कि sin इनवर्स x ताले x इक्वल टू केते sin u x इक्वल टू sin u ताले ए फंक्शन का एति कि जोंडा थिला सेटा sin u सामने सामने हो लेवल देखो यदि एटा हला यार केमिति डिग्री बारते लिखला इक्वल टू दियो एटी x स्क्वायर कॉमन नै ताले एटी x स्क्वायर जरे 1 आसनो प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर हो नै डिवाइड एटी x रे हम कॉमन नै जुटे ताले 1 प्लस x बाय y आसीनो ए y बाय x y बाय अबे देखो एटी x है उधर प्रैक्टिकली कौन होगा x कौन है x इज द फंक्शन ऑफ y by x आकर है ए टर्म इटा को कौन करले हमें फंक्शन ऑफ y by x देखो y by x ने यार 1 तो लेटर किछ ने 8 रे केवल अछि 1 अछि कौन अछि 1 अछि सो हियर n इक्वल टू 1 हियर देखो हियर n इक्वल टू 1 here n equal to 1 मु जेमती कहली नि कि फास्टा जानिया पे सेटा एक्चुअली बेस्ट मेथड सेटा देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर थिला तुमे एठी एते किछि मन रखिया दरकार नै जदि तुमे n equal to 1 मन रखछ सेति काफी कहि ना हमर फार्मूला होची x del u by del x plus y del u by del y equal to n u बस n रो वैल्यू दरकार सो n रो वैल्यू जानिया पे हेले मते जो मेथड रो आसु n इक्वल टू 1 टा मोर लिखियार अछि तने एई मेथड रे एटा अछि एग्जैक्ट मेथड केमति बाहर छै किंतु तुमे यदि बुझि न परछ एई सब तो ताले n इक्वल टू 1 जानिया पे हेले तुमको सही मेथड ता यूज करियो जे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अछि एटा तो गोटे टर्म ये भी गोटे टर्म एठी भी तळे भी ये भी गोटे ये गोटे यार पावर 2 यार 1 तने 2 रो 1 कले टोटल ऊपर पावर आसबो 1 एटा ट्रिक हेलो लिख लो n इक्वल टू 1 एबे पुट करो यूलर्स थ्योरम लिखो फ्रॉम यूलर्स थ्योरम यूलर्स थ्योरम कौन फार्मूला लिखो x del u by del x x del u by del x plus y del u by del y equal to nu equal to nu जगह कौन लिखियो फंक्शन f लिखियो सो n f लिखियो nu लिखियो जे इक्वल टू देखि n f लिखियो and function कौन लिखि n f so एडी हमें पुट करिया बोलो implies that the function रे कौन आसी बोलो x रहइबो x del f by del x ते कौन लिखियो ए टिके लिए एटा को तुम लिखबो हम u धरतले ना एडी फंक्शन हम f धरछे त सब u जगह रे f लिखते जेउ हम u लिखते ना एडी f लिखते एटा लिखते x del f by del x plus y del f by del y
equal to n f equal to f. So implies that एबे f ର फंक्शन टा कोन थिला f equal to sin u थिला f equal to sin u बा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एथि थिला नै से एबे वैल्यू पुट करा एडी ओरे के देखो del f by del x अछि del f by del x मु या को लिखि परबी del f by del u into del u by del x लिखि परबी कि नै हां काहे कि ना मोर फंक्शन टा अछि एटी sin u यदि sin u अछि फंक्शन ताले एटी del u आसीबो काहे ना हम कर परबी सो ए टर्म टा को ए जे टर्म को हम करबी x del f by del u फर्स्ट करबी ताले del f के sin u del sin u by del u हले cos u आसीबो कोन आसीबो cos u into आसीबो कोन del u by del x del u by del x लेखा सेमती y रे सेमती कोन आसीबो को y equal to y equal to कोन आसीबो y cos u del u by del y equal to n f n का तो वैल्यू 1 n रो वैल्यू कते 1 तने f रो एटा बुझि पारलो कि नै को एटा बुझि पारलो ए फार्मूला पुट इज f टा इज sin u तो sin u by u हले केते आछो del u cos u अरे del u by del x plus y को y रहला एठी पुनी del f by del u आसीबो into del u by del f साइड रे लिखि रखिता एटा हेले माने रहबो del f by del u into del u by del y del so del f by del u टा केते आसीबो cos u हला so implies that लेखो एबे cos u दीटा रे कॉमन चल जिवो cos u कॉमन जिवो नी एटी cos u अछि कोन जिवो cos u x del u by del x plus y del u by del y equal to f का केते देलो f रो वैल्यू sin u f रो वैल्यू so implies that देखो cos u टा डिवाइड हो जिवो cos u टा कोन होबो डिवाइड हो तो कोन रहबो x del u by del x plus y del u by del y equal to sin u by cos इक्वल टू कते sin u by cos u sin by cos कते tan u एटा हमको प्रूफ करे पैथिला देखिलो देखि प्रूफ हला सो इट कोन असला x del u by del x plus y del u by del y equal to tan u तो एई बळिया सब पार्शियल डेरिवेटिव गुडा करिवो सल्ला वेरी इजी अछि मेथड इजी नहीं है केवल तुम दीटा जगह रे यार पॉइंट मन रखे भाई हला दीटा पॉइंट ना n = 1 बारे केमती हला आ गोटे पॉइंट हला ए पॉइंट del f by del y टा को केमती भागी करू बुझेला ए दीटा पॉइंट जदि मन रख दबो तारे सब ए दिबो नेक्स्ट आ तो अब आ गोटे क्वेश्चन नियो काली करि के आसीबो if u equal to if u equal to log
if u equal to log x square plus xy plus y square x square plus xy plus y square u equal to एतिकी हला ताले prove that लेखा prove that Euler's theorem x del u by del x plus y del u by del y equal to 2 এটা প্রুভ করিব হলা এটা প্রুভ করি আসিব যে u equal to log x square plus xy plus y square হেলে কোন হবো প্রুভ দ্যাট x del u by del x plus y del u by del y equal to 2 এটা ভেরি ইজি হলা ये very easy एडी फंक्शन टा कोन नै जो कहलो f equal to e to the power u नै जो हैला f equal to e to the power u नै गले देखो log टा एपन को आसले e to the power u ताले फंक्शन टा कोन हितबे x square plus xy plus y square लेखि रखा जाकी घरे कर के आसी से पे मु u del f y del x नै कोन नै सॉरी x del fy del x नेबी प्लस y del fy del y नेबी इक्वल टू n f लिखिबी लिख सला परे एबे देखो ए केस रे f टा e टू पावर u आकर अछि तेन पुणी सेही फार्मूला del fy del x इक्वल टू कोन छिबो del u by सॉरी del fy del u इनटू del u by del x पुणी del fy del y टा कोन आसीबो पुणी से सेम मेथड इनटू del u by del x del y बुझबा लगे पुट करके वैल्यू कैलकुलेशन करले तुम कोन वैल्यू आसीबो इक्वल टू 2 कोन आसीबो इक्वल टू 2 एटा सरला एडे करके आसो यूलस तो ये सिलेबस रे कहीं यूलस फॉर्मूला लिखा नहीं है लेकिन तो एटा प्रैक्टिस करथिबो मे भी आपको काम रे आसो लेको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़थिले मने अछि कि नहीं आगे लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन कौन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन A differential equation is an equation which contains differential coefficients. A differential equation is an equation which contains differential coefficients. Differential माने डिफरेंशियल इक्वेशन का होची से डेरिवेटिव रो पार्ट थो ओइ तार कोएफिशिएंट भी थिबो हला जेमति एग्जांपल देखो एग्जांपल ला y स्क्वायर y by dx स्क्वायर एने d लिखिबो del लिखिबोनी dx स्क्वायर प्लस sin x इक्वल टू 0 ताउटे डिफरेंशियल इक्वेशन आउ केमति थाई परबे ना एमिति भी थाई परबे x square dx plus y square dy dx x square dy plus
y square dx equal to 0 एमती भी थाई पारे सो ए इक्वेशन को देखो एडी y अछि x अछि dx अछि तो मैं याको जदी इतके सॉल्व करिया पे चाहिए कोन करबी dy by dx करे लिखिबी केमते लिखिबी ना x square dy equal to y minus y square dx तले dy by dx केते आसीबो को देखि dy by dx केते आसीबो केते आसीबो dy by dx असले minus x square by y square बोल लिखिए minus y square by x square एती आसीबो काई ना एटी इक्वल टू कोन आसीबो x square dy equal to minus y square dx नहीं सेटी dx टा पडू पळे आसीबो dy by dx हेला x square टा पडू पळे आसीबो तले minus y square by x square एबे याको सॉल्यूशन करियो हां इंटीग्रेशन करियो बोथ साइड्स इंटीग्रेट बोथ साइड तले आसीबो सो डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स है गोटे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गोटे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टा कौन हम कहला हम पढ़ी जाबे मन अछि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो लेख ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मन रख ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन is the differential equation ordinary differential equation is the differential equation in which is the differential equation in which derivatives with respect to single independent variables are involved यदि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होइथबो ताले सेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हला सिंगल माने ए केस रे देखो ए केस रे हम एतरे डेरिवेटिव करिया विथ रेस्पेक्ट x टा y टा वेरी करछु विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोन होवे ना मोर देन वन वेरिएबल वेरी करथबो सेठी फंक्शन टा को हमें x और y बोथ रे वेरी करथबो एटी केवल बुझी पारनो कथा एटी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होची सेठी कोन थिला ना z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y सो ए केस रे यदि वो डेल्टा z लिखिबी ताले एटा बोथ x रे वेरी करछु y रे वेरी करछु किते बेटे एटी dy लिखिबी बुझी अछि तमे एटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एटा होची पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अब सेकंड पॉइंट लिखो partial differential equation involves partial derivatives with respect to more than one independent variable so जदि सेठी दीटा वेरिएबल थिबो जेमति कि हमें एग्जांपल x और y रो वेरी करथिबो तले सेठी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होबो किंतु यदि सिंगल वेरिएबल थिबो तले एटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट ऑर्डर देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest differential coefficient
highest differential coefficient existing in the equation, existing in the equation. So order of differential equation is the order of highest differential coefficient. जेमती कि आम एग्जांपल ले d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx ताले यार हाईएस्ट ऑर्डर कोनटा अछि d स्क्वायर y by एटा रे अछि नै कि सो यार ऑर्डर केते 2 ऑर्डर होछि 2 ए डेरिवेटिव पार्ट रे जेटा थिबो सेटा होछि तुमर ऑर्डर आ जदि डिग्री को डिग्री होछि यार पावर केते यार पावर 1 बुझिले ना ऑर्डर ऑफ डिग्री विथ डिफरेंस होछि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट अछि dy by dx तार जोटा अछि सेटा होछि तार ऑर्डर डिग्री कहले यार पावर केते यार पावर 1 यार पावर 1 बुझि परछ तने सेटा होछि डिग्री ऑर्डर लिख सालो इक्वेशन नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन degree of differential equation is the degree of highest order यार हाईएस्ट ऑर्डर केटा कहले हमें यार हाईएस्ट ऑर्डर होची 2 यार डिग्री केते 1 यार डिग्री 1 बुझिबा लगी ताले हाईएस्ट ऑर्डर रो जोटा डिग्री थिबो सेटा होचे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when the derivatives are free from radicals and fraction लिख लो यार मानने कौन ना एक केस देखो एक केस रे एटा केते सिंपल वाला लिखा हला रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन मींस मु गोटे इक्वेशन लिखि देबी x² dx plus y² dy divided by x² y² dy² plus x²। सो एक केस रे तुमे हठात जानि परिबनी जेतेबेल का एई बडे सिचुएशन को न आसी x² इक्वल टू मु कहबी यार डिग्री ऑर्डर बाहर करो तुमे करि परिबो कि सो से को जदि एई बडे इक्वेशन थिबो या कि तुमे सिंपलीफाई करके एई बडे इक्वेशन को आनिया पे चेष्टा करियो हला जदि हेई गला ताहले तार ऑर्डर डिग्री बाहर करि पारिबो बुझि पाले तेनो एटा कोन अछि एटा फ्रैक्शन आकार अछि एटा कोन अछि फ्रैक्शन आकार अछि यदि फ्रैक्शन आकार थिबो किबा रेडिकल आकार थिबो ताहले सेटा हमें ऑर्डर डिग्री बाहर करि परिबा नाही ताको हमें सिंपलीफाई करके एई बळिया सिंपल टर्म को आनिया पे चेष्टा करिया देले जे कि तार कोन हबो डिग्री आ ऑर्डर बाहर कर बुझि पाले सो एग्जांपल लगा गोटे एग्जांपल लेखो गोटे एग्जांपल लगा गोटे एग्जांपल लगा dy by dx equal to mx² आ गोटे ला x² dx plus x² dy plus y² dx equal to 0 सो इन बोथ केस रे एटर कोन हबो ऑर्डर ऑफ डिग्री या ऑर्डर देखो यार ऑर्डर होछि केते पावर 1 होछि ना डेरिवेटिव रो ताले 1 ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1 सो यार ऑर्डर केते ना ऑर्डर यार देखो एटा dy by dx अछि d स्क्वायर एटा अछि नाही ताले 1 कोन हबो आउ कोन एमानकर किछि पावर अछि कि पावर नाही ताले यार डिग्री भी केते हबो आज एति थाओ काली मन काली क्लास अछि ना पढ़ दे
तुम्हारा एटा एक्चुअली दीटा क्लास दवा कथा मतलब कोर्स सरीबनी दिसारी सर मत डाक जब मुझे फ्री थी दिसारी सार क्लास जो मुझे फ्री थी ताले डाक देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन एज ए फॉरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन एज ए फॉरियर इंटीग्रल सुना ये जो एस लिखुना कि देखो एस जो लिखुना कि फॉरियर इंटीग्रेशन माने कौन होची कहला x का ट्रांसफर होती x को इनवर्स से कौन होती इनवर्स x का ट्रांसफर होती x ये गोटे फंक्शन अछि f ऑफ x ताले एटा f ऑफ s को ट्रांसफर होती f ऑफ s टा कौन होती फंक्शन को ट्रांसफर होती सर एटा कौन कहले एक्जेक्टली होती यार एप्लीकेशन कौन मेन पॉइंट एप्लीकेशन होती धर मोटे धरबी एटा गोटे वेव फंक्शन जाउछ हला ए वेव फंक्शन रो ई जो पार्ट मतलब ये पार्ट एगो देखिबी धर ए रीजन देखिबी ए रीजन गुला कोन होची एस टा कोन एग्जैक्टली आछो एस प्लेन मन एस टा होची एस प्लेन हला धर मु गोटे एठी कोन करबी हाँ देखो मैं एटा कौन कर बेबे धर मु एटी उठे धर वेव फंक्शन हला सो ए वेव फंक्शन कौन होची पार्टिकल वाला एमिनेट मोशन को जाउ यार एग्जैक्ट पॉइंट रो मु तो एटी छिड़ा है आ जने एमिनेट छिड़ा है सो से जो वेव का कौन होची एबे सी गुटे प्लेन न थिला एटा एस प्लेन न पार्टिकल गुला मोशन केमति करछ एस प्लेन न पार्टिकल मूव एबे मु छिड़ाई हम तोरा ए रीजन टा देखिबे ए रीजन टा मु छिड़ाई आ गुटे एर को रीजन बुझियो समूह के पार्टिकल गुला को आ गुटे प्लेन रो तार व्यू टा देखि बुझि पाछ आ गुटे प्लेन धर एटा गुटे प्लेन रो अछि मु एगुड़ा टाणिबार माने होची एगुड़ा एमिति बाहर के अछि एमिति बाहर के अछि बुझि पाछ एटा आ गोटे प्लेन रो होची सर पूरा दुटा प्लेन हां बरा हम फॉरियर आ लाप्लास ट्रांसफर ये ट्रांसफर करछ माने कोन ना गोटे देखो सिंपल जिंस तुमे गाड़ी रो गोटे तार एनालॉगस होची तर मु गाड़ी रो पेट्रोल पकोछ पेट्रोल टा मु एमिति एडी ढाल देबी पेट्रोल चलियो तेणु पेट्रोल पाई कौन दरकार इंजिन दरकार से पर्टिकुलर इंजिन हेले जाई सेठी कोन हबो ना से गाड़ी गड़िबो यदि हम डीजल इंजिन में पेट्रोल ढालिबी चलियो एग्जैक्टली फॉरियर और लाप्लास ट्रांसफर होची एग्जैक्टली ए जो एस प्लेन तोरा मु गोटे वेव टा देखुची गोटे प्लेन तोरा लेट मोर वेव टा एई मोशन चलची एमिति चलची ना मु एबे कोन करबी कहलो ग्रुप ऑफ पार्टिकल माने मो सहित एई प्लेन रे मोर जो पार्टिकल गुला अछि मो एबे एई प्लेन रे चलची एई प्लेन में एमिति चलीबी माने एमिति चलची पुनी एमिति चलची मु सेई वेव चलची बोले से प्लेन बोले ता आपके आस बुझियो सेई पय एटा एपडू माने मो यार मोशन टा को एस प्लेन जे देखिबे ताले सेई पय सेठी एस यूज होची तो तोर गोटे आस्तो ना माइंड रे एस काई हम यूज करछ एग्जैक्टली धर हमें टेक्टोनिक प्लेट कथा कहछ सिंपल जिंस होची टेक्टोनिक प्लेट ग्राउंड
मो ग्राउंड रो तो कॉलेज होची ना मोर माउंटेन गुला काहे की थरहर हबो माउंटेन काहे की हबो सिंपल जिंस टेक्टोनिक प्लेट ऊपर पहाड़ अछि प्लेट टा मूव करछि पहाड़ भी ता सहित मूव करछि माउंटेन गुला भी सेठी बाडे होछि बुझा तले से टेक्टोनिक प्लेट ऊपर माउंटेन गुला होछि एस प्लेन रो जो पार्टिकल गुला अछि बुझि पारले टेक्टोनिक प्लेट गुला कोन ग्राउंड रे अछि ना से गोटे प्लेट ता ऊपर प्लेट ता कोन आमे अछि हला जे टेक्टोनिक प्लेट गुला बाडेइबो हला से ये सब केडी यूज हो केलो सब स्पेस केस रे लाप्लास ट्रांसफर का यूज हला धर गोटे मोशन को देखुची धर एरोप्लेन मोशन एरोप्लेन तो जाउची ना ता कोऑर्डिनेट रे तार जो एक्सिस रे जो पार्टिकल अछि सेगुला को तो गोटे प्लेन में जाउची ना मो कहबी एटा ए रकम मोशन करबे या से एगुला जाउची बुझि पाछी तो सेटा बोलियो लाप्लास ट्रांसफर एग्जांपल लाप्लास ट्रांसफर मींस ट्रांसफर करछ गोटे ऑब्जेक्ट को आउट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर माने से प्लेन टा को हम आउ गोटे प्लेन में लेखि देबो धर ए पार्टिकल ला हम कोन देखबी ऊपर को देखबी तार गोटे प्लेन टा को देखबी काली मैं एमती बसची गोटे चैनल अछि चैनल टा ना कोन कहलो भूली अछि 1 ब्राउन 3 ग्रीन ना कोन इंक्लूडिंग चैनल ना सेतरे फिजिक्स रो कांसेप्ट वाला आसे सेरो एई कांसेप्टटा आसला जे लाप्लास ट्रांसफर और फोरियर ट्रांसफर कांसेप्ट जो एस फॉरवर्ड हम जे एस लिखु जे सेरा फॉरवर्ड ठीक ना सेटा होची गोटे प्लेन को बुझी एस प्लेन ना गोटे थाई से को बड़ तो लेखो फोरियर इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटेड बाय फोरियर इंटीग्रल कौन थिला f of x एरा से दिन पढे थिले तुम के पढी ना हला आउट स्टार्ट करथु 1/2 pi integration minus infinity to infinity e to the power minus I omega x d omega integration of minus infinity to infinity f of t तो हॉस्टल पिला बड़ा नहीं है हॉस्टल पिला केते जण अछन तुमर लेखिला टेलो ओ फाइन आदे गोल रहिथो गोटे गोटे गुडे गुडे खाइ मोर एग्जाम बसी एटा कोन फोरियर इंटीग्रल थिला जब मैं आगे या को चेंजिंग कर लिखबी f of x इक्वल कोन जो 1/2 pi मैं कर को नहीं छी है ना माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए f of t थिला मैं f of t को आगे लिखी f of t 1 by root cover of 1/2 pi मैं को ये भीतर को नहीं गली है 1/2 pi इंटीग्रेशन ओवर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी minus infinity to infinity e to the power I omega देखो I omega के minus x infinity t अछि नहीं तो हम कौन लिखबी t minus x कौन लिखबी t minus x एटा एक t अछि d omega dt देखो सब सेम अछि देखो समस्त देखिए देखिए ये जल्दी आसे लिखिए इसको ताकि नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में और लगा अलग अलग
और सेटा पर लिखो एटा देखि दियो एटा पर लिखो एटा देखो एटा होची फोरियर इंटीग्रल इक्वेशन टा सो एटा को मुझे ऑर्डर सजाड़ देली सजाड़ के लिखली एफ ऑफ टी टाको आगे नहीं आसी 1/2 पाई को 2 पाई रहला इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन थला एठी ओटे देछा आ ओटे इंटीग्रेशन e टू द पावर i ओमेगा x थला एठी e टू द पावर i ओमेगा t थला तेना मोर i ओमेगा को कॉमन ने जो t - x नहीं कि सो t - x d ओमेगा रहला dt रहला मैं याको ऑर्डर काहे के लिखियो ना डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में प्रॉपर्टी अछि देखो we know that Dirac delta function को हम केमिति लिखो we know that Dirac delta function टा एमिति लिखा जाए देखो डेल्टा t minus x equal to এই ভ্যালুটা আছে হ্যাঁ না রে ভুলে গেল লেখনি Dirac delta function হচ্ছে f of x equal to integration of minus infinity to infinity এটা f of t এই টার্মটা হচ্ছে ডেল্টা t minus x delta t minus x dt and let it equation 1 लिखो এটা equation 2 तो এটা 1 दियो এটা 1 दियो এটা 2 दियो এটা 3 दियो देखो 2 और 3 ର सिमिलरिटी कोन देखो 2 और 3 इक्वेशन नो एडी f of x अछि f of t अछि dt अछि तने ई डेल्टा t minus x जेटा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ता का से मैच करा जो हम कर्ली ब्रैकेट लिखा बस देखो hence from equation 2 and 3 we get from equation 2 and 3 we get equation 2 and 3 we get so कौन मिले डेल्टा t minus x एटा डेल्टा t minus x equal to कौन मिले 1/2 पाई जेटा पाई लिखो 1/2 पाई integration minus infinity to infinity e to the power I omega t minus x d omega so it is the Dirac delta representation of Fourier integral which color ହେଲା बुझी पारला एटा पढिबा एग्जाम में निश्चित पढिबा इंपोर्टेंट नहीं Dirac delta representation आगो थर ना कई थर ओरे पढितला पूरा Dirac delta पढितला ହେଲା देखो आ गोटे कथा हला एटा लिख दे इक्वेशन 4 is the expression for Dirac delta function the lekho equation 4 is the representation of Dirac delta function equation 4 is the representation of Dirac delta function as a Fourier integral
representation of Dirac delta function as a Fourier integral. Representation of Dirac delta function as a Fourier integral. मन रहा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो आम x इक्वल टू 0 पुट करवा देखो इफ x इक्वल टू 0 डेल्टा t डिराक डेल्टा फंक्शन टा कौन जीवो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e टू द पावर i ओमेगा t e टू द पावर i ओमेगा t dy बुझी पाल सो डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 बाय इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e टू द पावर i ओमेगा t d ओमेगा एटा इज कौन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिराक डेल्टा रिप्रेजेंटेशन या पर कौन है सिलेबस कहले आयोला प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस ना करले करियो गोटे खाली कर क्वेश्चन लिख Fourier what is Fourier cosine transform of what is Fourier cosine transform of t minus half t to the power minus half यार cosine transform केते कहबो एक्सर जेडा लेख कन्वोल्यूशन थ्योरम एटा होची यूनिट 3 है इंटीग्रल थ्योरम 2 कन्वोल्यूशन थ्योरम एटा यूनिट 3 रो स्टार्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम ये जे थ्योरम वाला तो पूरा घुसी दबो बुझलो पूरा मन रख दबो माइंड 25 इंटीग्रल थ्योरम 25 रेमन कंडीशन हला एनालिटिसिटी कन्वोल्यूशन थ्योरम जति थ्योरम छी पूरा ए टू जेड प्रैक्टिस सने कन्वोल्यूशन थ्योरम CONVO हां इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म 2 ठीक है हायर ऑर्डर कन्वोल्यूशन स्पेलिंग कौन कहलो CON कन्वोल्यूशन थ्योरम convolution theorem. Okay. The Fourier transform of the convolution. The Fourier transform of the convolution. The Fourier transform of the convolution of. The Fourier transform of the convolution of f of t and g of t and g of t is the product of their Fourier transform is the product of their Fourier transform that is I told you that is Fourier transform f of t Fourier transform of f of t star this is g of t
g of t equal to देखो Fourier transform of f of t, Fourier transform of g of किछ नहीं करो किछ नहीं देखो दीटा को मिसिंग कर ये स्टार भलिया लिखि तो भी स्टार भलिया लिखले चलियो इनटू लिखियो इनटू किछ लिख न लिखले चलियो होला ये किछ न लिखछु एठी चलियो यार प्रूफ देखियो ये प्रूफ देखियो हां देखो प्रूफ ला नील अपन आए थे बुझी दियो हे Fourier transform of AB equal to Fourier transform of A into Fourier transform of B बुझी पालो डेरिवेशन बुझी दियो हाँ डेरिवेशन कर Fourier transform देखो ये सब केस रे ये गुडा जदी प्रूव करिया पे थिबो ताले आगे अटेम्प्ट करबो काई कहला Fourier transform of f of t लिखिबो तार प्रूफ रे कोन थिबो ले Fourier transform of f of t लिख देलो Fourier transform of g of t लिख देलो ताको दीटा f of t g of t को मल्टीप्लाई करिवो ताको इंडिविजुअल लिख देबो बस सरला ये किछ मने भी न पड़ची ए बडा लिख देके पळा से मान प्रूफ देखो प्रूफ देखो प्रूफ 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 कौन हो देखो the convolution of two function f of t and g of t is defined as देखो proof लिख लो the convolution of two functions the convolutions of two functions f of t and g of t is defined as f of t and g of t is defined as कौन हम लिखला f of t g of t किछ न लिखले चलेबा मल्टीप्लाई कर दियो नहले स्टार दो दियो जेटा लिखले चलेबा 1/2 this now into infinity f of u g t minus u du এটা হচ্ছে কনভলিউশন না एक्चुअली f of t g of t रो कन्वोल्यूशन हेले एमिति फंक्शन पे आसे एटा को du f of u लिखिन ना f of u तो आउटे वे लिखिबे 1/2 pi देखो म एडी जी यू भी लिख पाता हूं f of t minus u भी लिख पाती है ना तो ये उल्टा टेस्ट है 7 रिवर्स टेस्ट है कौन f of t minus u भी लिख पाबी g of u लिख पाबी du लिख सेटा मन रखे f of t gt रो कन्वोल्यूशन फॉर्मूला से ताले यार फोरियर ट्रांसफॉर्म करियो नहीं कि हमें ए फंक्शन कोन करियो फोरियर ट्रांसफॉर्म करियो हां लेक्चर ना देखो फ्रॉम डेफिनेशन द फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Fourier transform of f of t multiply g of t is given by from definition Fourier transform of f of t multiply g of t is defined
h by Fourier transform of f of t, g of t is equal to 1 by root over of 2 pi minus infinity to infinity f of t g of t. क्वेश्चन है प्रूफ पास करें, प्रूफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम। एट कौन से e टू द माइनस i ओमेगा t dt और फंक्शन यदि e टू द i ओमेगा t dt कर दो तने सेटा इज कोन फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे वैल्यू पुट करबा यार वैल्यू पुट करबा नहीं यार वैल्यू 1 by root over of 2 pi रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो यार वैल्यू क्या आस्ते गलो 1 by root over of 2 pi आस्ते आपण आस्ते माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थिला f of q थिला g t minus q थिला t minus u dq e to the power minus I omega t dq। এই ভ্যালুটা পুট করলে এই ভ্যালুটা কোন স্লাইডে দেবেনি है ना, সেই ভ্যালুটা পুট করলে সেটা इक्वल टू 1 by root over of 2 pi रखली हूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करली f of u का एक्चुअली पड़े f of u dq रहला आउट देबो 1 by root over of 2 pi माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लास ସେମାନେ ଯେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଝିବେ e to the power minus I omega t dt मतलब सजा देली देखो f of u du बोल्ट नहीं पड़ा इसलिए तो 1 by root over 2 pi रहला g t minus u t काहे ना এটা t t ने अछि तो t रहला बुझल। देखो ए केस रे देखो 1 by 2 pi अछि g t minus u अछि एटा अछि तले एटा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है g t minus u सेटा कहार फोरियर ट्रांसफॉर्म होबो एटा हबो देखो 1 by root over of 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of q d को d रहला ए टर्म का कहार हबो ना एटा अछि फोरियर transform of g t minus u से टर्म का कहार फोरियर ट्रांसफॉर्म g t minus u रो फोरियर ट्रांसफॉर्म काइना फंक्शन अछि e टू द ओमेगा t अछि तन सेटा कहार हबो फोरियर ट्रांसफॉर्म g t minus से तो इक्वल टू 0 इक्वल टू देख लिखा 1 by root over of 2 pi minus infinity to infinity f of u du रहला आउट आस्थिबो एटा कोन कला काजो ना e to the power minus I omega t f of omega so 8 टर्म f of g t minus u को हमें लिख परिबा 8 टर्म को लिख परिबा एडी ब्रैकेट रे लिखबो एटा होची गोटे फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एटा कोन कहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कोन कहूची ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी रे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म दा हैला सेही ट्रांसफॉर्म दा को हमें एई बळे लिख परिबा f w e to the power I omega t एटा होची शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जीरो हैला भी एटा लिख सल लगो
तो तुमको ये कौन मन रखा हम ना ये टर्मटा मन रखा या एमती सजाड़ क्या जी टी माइनस यूटा को तुम्हें फरियर ट्रांसफॉर्म देखेब है आ गए मन रखा हम एफ ऑफ टी जी टी जगह कौन यहाँ लिखा यहाँ हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मन रही दुटा यही केस फास्ट मन रख कन्वोल्यूशन थ्योरम तार फरियर ट्रांसफॉर्मटा हूँ एमती लिखा लिख सारापर यहीटा को एमती भांग भांगी सारापर यहाँ लिख एफ ऑफ टी जी टी माइनस ताको ये लिख जोटा कि फॉर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मन रहा एबे सजाड़ देख एफ ऑफ ओमेगा बाहर चली लिख एफ ऑफ ओमेगा कैपिटल एफ लिख स्मॉल एफ को एमती लिखु कैपिटल एफ को एफ ऑफ ओमेगा 1/√2 पाई थिला 2 पाई रखिलो तापर इंटीग्रेशन जातला माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ u du ना एफ ऑफ u एटा रखछि से e टू द पावर माइनस i ओमेगा t du लाइक चलो देख एटा जो अच्छी ये गोटे जमी यहाँ थी ना कि आम यहाँ ये गोटे फरियर ट्रांसफॉर्म भाई अच्छे से लिखी एफ ओमेगा थी यहाँ को लिख जी ओमेगा से पुणी से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई माने ये जो एफ ऑफ ओमेगा टा होची एफ ऑफ टी रो फरियर ट्रांसफॉर्म आ जी ऑफ जो हमर थिला एटा एफ ऑफ टी रो होची एफ ऑफ ओमेगा फरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी रो फरियर ट्रांसफॉर्म होची एटा ए जो ओमेगा टी अछि तेनो एटा जी ओमेगा तेनो एटा को लिखवा दैट इज फरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जोटा थिला प्रूव करे भाई फरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी इक्वल टू फरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इनटू फरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी फरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी एटा प्रूव करया पे थिला Fourier transform of f of t star g of t equal to Fourier transform of f of t Fourier transform of g of t, which is convolution theorem. Like which is convolution theorem. सेटा गोटे लाइन रे लिखियो जो प्रूफटा थिला एटा गोटे लाइन में ही लिखियो थिला एटा एती ही लिखियो तो करबो एटा इक्वल टू तळ को लिखियो ना एटा प्रूफ कर हला व्हिच इज कन्वोल्यूशन एटा बुझी तार प्रूफ है आ गोटे लाइन अच्छे से देखो सो यूजिंग द इनवर्स फॉर योर ट्रांसफॉर्म यूजिंग द इनवर्स फॉर योर ट्रांसफॉर्म we get
जे एफ ऑफ टी देखो फॉरियर ट्रांसफॉर्म एटी देखो एटा फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एटी थिला मु एबे खाली एटा धरबी यार इनवर्स कले कोन हो से एटा आसी ना फॉरियर ट्रांसफॉर्म एटी गले एटा आसी सो एफ ऑफ टी जी ऑफ टी इक्वल टू देखो कौन से ना एफ इनवर्स माने फॉरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स एफ ओमेगा स्टार एफ इनवर्स जी ओमेगा को ए जी ओमेगा एफ ओमेगा रे कोन एफ ओमेगा होची फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी होची जी ओमेगा हैला तो जी ओमेगा एफ ओमेगा रे यदि फॉरियर इनवर्स कर दे ताले एटा सो एटा जनरल थ्योरम मन रखो एटा जनरल थ्योरम यार तुम्हारो प्रॉब्लम पकेबो कोन पकेबो प्रॉब्लम जेंति गोटे एग्जांपल देखो एप्लीकेशन वेस्टिंग देखो एग्जांपल करि आसबो खाली वेरीफाई कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ verify convolution theorem of Fourier transform if f of x Fourier transform if f of x equal to g of x equal to e to the power minus x square एटा प्रूव करके आसीबो